Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Swedeep Academy. As you can see here, today now we are discussing the MCQs of development. Okay, first we'll start with knowledge based questions. So students, as you know, the main idea behind this chapter is to understand the concept development properly. So we have already discussed the chapter completely. I am chapter discuss kariche. So now we will discuss from the CBSE exam point of view. I am discuss kariba different PYQs discuss kariba and also sample questions MCQs pattern of sample questions discuss kariba with assertion and reason base, so that ki exam रे गोटे कॉन्फिडेंट भी क्रिएट होबो. एंड विथ दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि चैप्टर उपरे बहुत बढ़िया गोटे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होबो. जो चैप्टर मेन ऑब्जेक्टिव कि आम डेवलपमेंट आइडिया को भल से बुझीबा तो ता ऊपर गोटे कंप्लीट फाउंडेशन डेवलप होबो. ओके, सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि जमती सब मु कहे ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ MCQs ऑलवेज कीप बुक विथ yourself. Okay, book निज पाखे धरी बसा एंड देख जे केमती सीरियली क्वेश्चंस आसुची को पार्ट रो क्वेश्चंस आसुची अंडरलाइन करो बुक रे. ओके, एंड दैट विल हेल्प्स यू ए लॉट व्हेन यू विल रिवाइज द चैप्टर लेटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, दैट इज व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द कांसेप्ट डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. ओके, वी नो दैट कि आम चैप्टर ऑफ फर्स्ट हेडिंग ही थिला व्हाट डेवलपमेंट promises different people different goals. Okay, so what is the main idea behind this concept? Okay, let's see. All people want the same type of development? No, I mean discuss करतले जे different people मानकर goals कौन था different था. काहे के different था ना, because से मानकर life situation अलगा, because their aspirations and desire अलगा. Okay, they seek things that are most important for them. तो सेति पे सबु लोकंकर developmental notion same नुह. So development means only economic growth? No, with economic growth आमर जदि quality of life improve होची then only we can say that is development. So भी हबनी different people have different needs and aspirations. Yes, this is the right answer. But मु सब बेले कहे always read every points. Okay, every माने objective रो प्रत्येक options को पढ़ो. Development is possible only in rural area. No, कहीं urban area कहीं होबनी. So right answer is option C. Second, which one of the following is most likely to have different developmental goals? Okay, किसी situation को आ जाइए तो को केस रे chances is very high कि developmental goals कौन होबो ना different होबो. CBSE PYQs. Okay, two rich farmer, two politicians of the same party, a teacher and a student, a landless laborer and an industrialist. Okay, कौन कहा जाउची ना को केस रे. ओके, को केस रे मोस्ट लाइकली माने चांसेस इज वेरी हाई कि डेवलपमेंटल गोल कौन होबो ना वेरी करिवो. देखो बोथ रिच फार्मर चांसेस इज वेरी हाई कि हाँ एमानक भितर भी डेवलपमेंटल गोल्स अलगा रहिबो, बट को केस रे चांसेस इज वेरी हाई. जदि आमे कहिबा टू फार्मर्स, टू पॉलिटिशियंस फ्रॉम द सेम पार्टी, टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट कर भी डेवलपमेंटल गोल सेम. जे इमीडिएट गोल होची तांकर जे आमे केमते आगामी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट फॉलो करिबा. ओके, हमर परफॉर्मेंस बेटर रहबो. तो आमे जदि देखिबा ए लैंडलेस रूरल लेबरर एंड एन इंडस्ट्रियलिस्ट, देन इन दिस केस ओके डेवलपमेंटल गोल कंप्लीटली डिफरेंट रहबो. ओके, चांसेस इज वेरी हाई. मु एहा कहूनी जे ABC ऑप्शन रे डेवलपमेंटल गोल्स वेरी रहिबोनी, बट कंपैरेटिवली जते आमे एनालिसिस करछे चांसेस इज वेरी हाई इन द केस ऑफ डी कि आमर डेवलपमेंटल गोल कौन रहिबो उभयंकर वेरी करिवो. सो दिस इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन गोल फॉर ऑल द पीपल. ओके, so CBSE PYQs variant means say type. Okay, which one of the following is a common goal for all the people? Income, good education, better health, a secure and respected life. Obviously the right answer will be option D. A secure and respected life is समस्ते चाहिए. ओके, मे बी इनकम क्या दरकार नहीं पारे, मे बी गुड एजुकेशन क्या दरकार नहीं पारे, गोटे कॉमन गोल हो पारे नहीं भी पारे. ओके, बट ए सिक्योर एंड रेस्पेक्टेड लाइफ समस्त को आवश्यक. ओके, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन
D. The next, which of the following is a non-material goal of development? Okay, non-material goal. Okay, आम डिस्कस करथिले that is को सेक्शन रे आम डिस्कस करथिले जे फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स पार्ट आम कौन डिस्कस करथिले जे besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, जहाँ को कि आमे कहाँ अंडर रख परिबा ना नॉन मेटेरियल गोल अंडर. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेरियल गोल ऑफ डेवलपमेंट? हाई इनकम, better crop prices, job security and a large houses. तो नॉन मेटेरियल लार्ज हाउस मेटेरियल गोल, बेटर क्रॉप प्राइसेस मेटेरियल गोल, हाई इनकम मेटेरियल गोल, बट कहि परिया जॉब सिक्यूरिटी. ओके, so this is a non material goal. Okay, job security, equal treatment, freedom, so this all are comes under non material goal of development. Next, what conclusion can be drawn from the statement what cannot be measured may still be important? Okay, कौन कह जाउची आमे ए स्टेटमेंट रो कौन कंक्लूजन ड्रा करि परियो? व्हाट कैनॉट बी मेजर, जहाँ मेजर करा जाई पारु ना. यू नो दैट मेटेरियल गोल्स कैन बी मेजर्ड बट नॉन मेटेरियल गोल जेंति मु कहली इठे जॉब सिक्यूरिटी, देन फ्रीडम, ओके, इक्वल ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट, ओके, ये सब को आमे मेजर करि परिबा नाही. सो व्हाट कैनॉट बी मेजर मे स्टिल बी इम्पोर्टेंट. हाँ, किसी जिनस एमती भी नॉन मेटेरियल गोल्स आमर अच्छी जहाँ कि आम मेजर करें बट तथापि भी बहुत इंपोर्टेंट. तो स्टेटमेंट कौन कंक्लूजन ड्र कर. सो लेट्स सी, ओनली मेजरेबल थिंग्स मैटर इन लाइफ, नो मेजरेबल थिंग्स भी, नॉन मेजरेबल थिंग्स लाइक नॉन मेटेरियल गोल भी आम इंपोर्टेंट. इमेजरेबल एस्पेक्ट्स लाइक डिग्निटी, सिक्यूरिटी डीपली इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ. येस, ये गोटे राइट ऑप्शन हो पार. देखिए आंसर कौन. इनकम इज द ओनली डेवलपमेंटाल गोल. नो, डेवलपमेंट कहले इनकम है आम केवल कहवा ग्रोथ होची. इनकम विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हवा दरकार टू बी कॉल्ड डेवलपमेंट. स्टैटिस्टिक्स एलोन कैन डिफाइन हैप्पीनेस. नो. सो राइट आंसर क्लियरली जना पड़ुची. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज immeasurable aspects like dignity and security actually our quality of life को deeply impact करे. That's why material and non-material goal both are important, and that's why we discuss करतले for development people look at mix of goals. Next, what does national development refers to? Okay, what does national development refers to? National development कहले हमें कौन बुझू ना growth of cities only, growth of cities only, development of individual state, the ability of a nation to improve the living standard of its people, income equality among all people. देखो C and B तो कदापि आंसर हबनी. ओके, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टेट, ग्रोथ ऑफ सिटीज ओनली, नो. बट सी डी भितर आम देखा कन्फ्यूज से इनकम इक्वालिटी एमंग ऑल पीपल. हाँ, इनकम इक्वालिटी समस्त भितर रहिबा द्वारा गोटे कंट्री डेवलपमेंट होउची. बट सी डी भितर मोस्ट अप्रोप्रिएट कोटा दैट इज ऑप्शन सी, द एबिलिटी ऑफ नेशंस ऑफ ए नेशन टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स पीपल. ओके, जेते गोटे नेशन रो एबिलिटी पोटेंशियलिटी इम्प्रूव होची कि सी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोकों को दे परिबो, देन हमें कहबा कंट्री डेवलप होची. दैट इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. द नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द आइडिया ऑफ नेशनल डेवलपमेंट? सेम कांसेप्ट ऊपर क्वेश्चन अछि. सो लेट्स सी, एवरीवन एग्रीज ऑन वन डेफिनेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट. समस्तंकर नेशनल डेवलपमेंट रो नोशन बा डेफिनेशन समस्त सेम. ओनली द रिच डिसाइड व्हाट नेशन डेवलपमेंट इज. नो. पीपल मे हाव डिफरेंट इवन कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट. हाँ, ये अप्रोप्रिएट फील होची. देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, इट इज ओनली अबाउट टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ. नो, केवल टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है ताको डेवलपमेंट कहबानी. एवरीवन एग्रीज ऑन वन डेफिनेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट मीन्स नेशनल डेवलपमेंट नोशन समस्त सेम. नो. द राइट आंसर विल बी जेमती आम पूर्व देखी पर्सनाल पर्सपेक्टिव रे गोटे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव रे जमती देखी जे आमर डेवलपमेंटाल गोल भेरी हो पारे, कॉन्फ्लिक्टिंग हो पारे. ठीक से भाई नेशन डेवलपमेंट नोशन भी डिफरेंट पीपल मानक डिफरेंट हो पारे एंड कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो पारे. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. द नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज क्राइटेरियन? व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज क्राइटेरियन टू कंपेयर कंट्रीज? What is the most commonly? Okay, always remember. Okay, कि कहे जे
टोटल इनकम की कौन कहे बट ऑलवेज रिमेंबर इकोनॉमिक्स रे कंसीडर करा जाए दैट इज एवरेज इनकम and the per capita income, average income or the per capita income. This is the most commonly used criterion for compare countries. Okay, next, per capita income refers to, okay, next is per capita income refers to, what is the definition of per capita income? I discuss karthile, that is per capita income is equal to total income divided by total population. So this is the definition of per capita income, total income divided by total population. So let's see, income of the richest person, no. Total income of the government, no. Income per person in a country, yes. Income per person आको हमें कैलकुलेट करिया केमती, per capita income को कहा जाए एवरेज इनकम बा इनकम पर पर्सन आको कैलकुलेट करिया केमती, दैट इज टोटल इनकम, गोटे कंट्री टोटल इनकम को हमें डिवाइड करवा तार टोटल पॉपुलेशन सहित. सो दिस इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, और आल्सो इट इज कॉल्ड एज एवरेज. Okay, average income or per person income, all are same. Okay, the next, in 2004 based on World Bank classification, what category did India fall under? Okay, rich country, middle income country and the low income country. Okay, the right answer will be low income country. Okay, हमें पढ़ी World Bank रो classification. Okay, World Bank को भली compare करे different countries को ना, it use per capita income, it use per capita income as the criterion to compare different countries, and according to that we can categorize all the countries into 3 class. Okay, rich, then middle income countries and low income countries, and India को section को belongs करे ना, it is belongs to low income country. Okay, actually जदि ए ऑप्शन चारिटा जदि हमें देखिबा, that is rich, middle, low and develop, then आमे कहिबा low income country. Okay, again it कहा जायछि in 2004. Okay, but exam रे जते बेले क्वेश्चन आसे, okay, एटा 2004 लिखा है, बट देखियो बुक रे अछि 2017 डाटा अछि, हैला 2017 डाटा अछि. एई भली जते बेले क्वेश्चन आसे, ऑलवेज रिमेंबर निहाती मेंशन हेतिबो को ईयर को बेस करी क्वेश्चन पचरा देछि, एंड अकॉर्डिंग टू 2017 जदि हमें बुक रो डाटा देखिबा, ओके, मिडिल इनकम कंट्रीज को भी 2 पार्ट डिवाइड करा होछि. वन इज अपर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड सेकंड इज द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज. जदि एटे थांता लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड अकॉर्डिंग टू 2017 क्वेश्चन थांता, देन आंसर हेतंदा कोन ना लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज. ओके, चांसेस इज वेरी लो कि ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो, बट हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे ए टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे, बट सीबीएसई एग्जाम रे बुक रे जहाँ भी इनफॉरमेशंस अछि अकॉर्डिंग टू दैट ही क्वेश्चन आसे. एंड लाटेस्ट बुक जदि मु कहबी, लाटेस्ट बुक रे 2017 रो जेतु डाटा अछि, सो से हिसाब रे जदि हमें कहबा राइट आंसर, देन इट विल बी लो मिडिल इनकम कंट्री, low middle income country. Okay, that will be the right answer. Next, why is average income is used for comparing country? आमे पढ़ी थिले. Okay, as compared to the total income, average income होची गोटे better criteria. काहे कि ना total income रे population को consider करा जायनी, but in average income आमे per person income, okay, average income आमे consider करू, and that's why आमे कहि परिबा for comparing countries average income is better than what ना total income. So से आइडिया को नहीं हमें देखिए ऑप्शन रे कौन कहा जायछि, because it reflect only the richest people income, no. Because it consider economic and non-economic goal, no. Because it gives useful estimate of income per person, yes, useful estimate of income per person. Okay, हमें डिस्कशन करी थिले कि जेते बेले हमें टोटल इनकम को नहीं कि हमें कंपेयर करछे डिफरेंट कंट्रीज को, प्रॉब्लम कौन होची बेले बेले बोथ कंट्री रो पॉपुलेशन कौन हे होची डिफर थाए, बट सेमानकर टोटल इनकम कौन थाए ना सेम थाए. एंड से केस रे टोटल इनकम गोटे बेटर मेजर नुह, गोटे बेटर इंडिकेटर नुह जे को कंट्री केते डेवलप. एंड इन दैट केस हमको कौन करिया पड़े ना, हमको कंसीडर करिया पड़े दैट इज द पॉपुलेशन. एंड टोटल इनकम सह जेते बेले हमें पॉपुलेशन को कंसीडर करू, देन हमें पाई जाऊ कोन ना एवरेज इनकम. एंड दैट्स वी कैन से दिस इज द best method as compared to the total income to compare different countries. So right answer will be option C. The next,
व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ यूजिंग एवरेज इनकम एवरेज इनकम रो कौन प्रॉब्लम थिला आम डिस्कस करते मन थी टोटाल इनकम देन टोटाल इनकम रो लिमिटेशन जो आम यूज कले टोटाल इनकम रो लिमिटेशन पाए आम यूज कले एवरेज इनकम एंड एवरेज इनकम रो भी पुणी देखले आम कौन ना लिमिटेशन देन आम कहते ना नॉट ओनली एवरेज इनकम विथ एवरेज इनकम आम अदर क्राइटेरियाज को भी आम कंसीडर करवा ओके ये आम पढ़ी डिस्कस करते ओके सो व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम इट कैनॉट बी कैलकुलेटेड नो इट हाइड्स इनकम इनइक्वालिटीज देखिबा इट ऑलवेज इनकरेक्ट नो इट कैनॉट बी यूज इन इकोनॉमिक्स नो ओके ये ऑप्शन कथा मन पा इट हाइड्स इनकम इनइक्वालिटीज यस ओके गोटे टेबल थिला मन पका टेबल आम डिस्कस करथिले जे डिस्पैरिटीज को ओके डिस्पैरिटीज को ये शो करे नाही इनकम डिस्पैरिटीज को ये शो करि पारे नाही ओके आई थिंक मन थी मुझे से डेप्थ को जाऊनी मु जस्ट केवल रिमाइंड कर दूचे जे को एग्जांपल टेबल नंबर 1.2 रे हम डिस्कस करथिले ओके एग्जांपल नहीं कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज जदि मन ना गो थ्रू माय वीडियो आराम रे कॉन्सेप्ट आप बुझी पारे नेक्स्ट व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डायरेक्ट क्वेश्चन व्हाट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डाइंग बिफोर 1 year per 1000 life birth that is the infant mortality rate okay इथरे कंफ्यूज होबनी बिफोर 1 year okay number of children dying before age 5 no okay always remember before 1 year and per 1000 life birth okay 100 no इधर मन रखार अच्छे 100 रे कन्फ्यूज हुए यहाँ 1 year रे कन्फ्यूज हुए रिमेनिंग किसी प्रॉब्लम होबनी सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डाइंग बिफोर 1 year per 1000 life birth what do public facilities refers to public facilities provided by the government okay and government द्वारा जो public facilities provide हुए सी कौन थाए ना फ्री ऑफ कॉस्ट थाए लो कॉस्ट थाए तो दैट्स व्हाई राइट आंसर विल बी essential service provided for free or at low cost we can say that is called public facilities and ये के provide करे ना government next which of the following is not a public facility देखिबा public transport ये public facility clean drinking water ये भी public facility shopping mall ना ये नो ये private individual मानक द्वारा ये मिली था ओके गवर्नमेंट नो shopping mall नो so public hospital yes it is also a public facility so right answer will be option C okay next Kerala has low infant mortality rate okay IMR केरला रे बहुत लो कहीं ना बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज कौन थी बेटर थी सो इट हैज एडिक्वेट हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज दैट विल बी द राइट आंसर ओके नेक्स्ट व्हाट डज पीडीएस स्टैंड फॉर ओके पीडीएस कौन ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डिटेल जावा किसी आवश्यक नहीं 9th क्लास में पढ़ी नेक्स्ट व्हाट इज एचडीए स्टैंड फॉर ओके ह्यूमन डेवलपमेंट index and it is prepared by UNDP United Nations Development Program okay remember and what are the different criterion used under human development index or to calculate human development index कौन criterion use करा जाए ना हमें health status को consider करो and to know health status हमें know IMR and also we consider okay sorry not IMR आमे हेल्थ स्टेटस ने आमे कंसीडर करू दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड टू नो द लिविंग स्टैंडर्ड आमे यूज करू पर कैपिटा इनकम एंड एजुकेशन स्टेटस को देना पे आमे यूज करू दैट इज मीन years of schooling okay so these three criteria are used by the UNDP for calculating human development index and just हम discuss करें UNDP is published by United Nations Development Program which of the following is not an HDI indicator ए भीतर कोटा HDI indicator just पूर्व डिस्कस करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम यूज करछे
टू नो द हेल्थ स्टैंडर्ड पर कैपिटा इनकम यूज करछे टू नो द लिविंग स्टैंडर्ड लिटरेसी रेट पे हम यूज करछे ओके मीन स्कूल ऑफ ईयर मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग लिटरेसी रेट ए सब को यूज करा जाए टू नो एजुकेशन स्टैंडर्ड तो मिलिटरी एक्सपेंडिचर ओके दिस इज द राइट आंसर जहाँ को कि आम कंसीडर करूने टू कैलकुलेट द एचटीआई गोटे इंडिकेटर नुह व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहले कौन बुझ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो कही टू एस्पेक्ट थिला गोटे थिला प्रेजेंट सेकेंड हूँ दैट इज फ्यूचर प्रेजेंट नीड को फुलफिल करने सह फ्यूचर प्रति जब आम कनसर्न्स अच्छे देन वी कैन से दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो लेट्स सी यूजिंग मोर फॉसिल फ्यूएल नो फॉसिल फ्यूएल मोर यूज करने द्वारा आम फ्यूचर नीड को फुलफिल करिपरिबा नाही ओके डेवलपमेंट दैट कैन बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन येस ये अप्रोप्रिएट फील हो देखिए आगु कौन डेवलपमेंट दैट यूज करेंट टेक्नोलॉजी नो डेवलपमेंट दैट डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट नो सो राइट आंसर विल बी डेवलपमेंट दैट कैन बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन ये डेवलपमेंट हवा दरकार जहाँद्वारा आम फ्यूचर जनरेशन को नीड को फुलफिल करने रिसोर्सेस को भी आम मेंटेन कर रखिपर दैट इज कॉल्ड व्हाट ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो दिज आर ऑल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस जहाँकि कि चैप्टर हो पार नाउ लेट्स सी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ओके चैप्टर एक्चुअली एते मेजर क्वेश्चंस आसेनी ओके आई थिंक आम 80 to 85 क्वेश्चंस ही डिस्कस करवा मोर देन 100 क्वेश्चंस हेनी चैप्टर बट बहुत ही इजी अच्छी जदि केवल मो सह चैप्टर को लाइन बाय लाइन मुझे पढ़े मोर वीडियोस जने देखिबो एंड विथ दैट जदि ए MCQs प्रैक्टिस करबा आई एम 100% श्योर कि गोटे भी आंसर तुम भूल हेनी ओके भेरी इजी चैप्टर एंड रोट लर्निंग टोटाली आवश्यक नहीं घोषिबा टोटाल आवश्यक नहीं ओके जस्ट माइंडफुली जदि आम पढ़ा कॉन्सेप्ट को भलसे आम बुझीचे ना इजिली आम चैप्टर मार्क नहीं पारिबा ओके सो लेट्स सी A girl demands equal freedom and opportunity as her brother. This reflect which type of developmental goal? Okay, बहुत बढ़िया question. This reflect which type of develop? I think this is the PYQs. I think ये ଗୋଟେ previous question मत लागू ची I think कौन सा exam रे आसी थिला. Okay, a girl demands equal freedom and opportunity as her brother. तो ये कौन? ये तो economic नुह, ये तो regional नुह. Confusion आसीबो that is social ना political. Okay. And what will be the right answer? पिला कहिबे political but right answer will be social. Okay. Because ये सोसाइटी कथा कहूँ ये आम गर्ल जिते ता बॉय तार भाई सहित जिते सी कंपेयर करे एंड इक्वल फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज से डिमांड करे ये कंट्रीर पॉलिटिकल आइडियाज को टच को नहीं फ्रीडम से सेंस रे कह जाए गोटे घर भीतर आम सोसाइटी जो रही आम मेल मानू जी प्रायोरीटी दौचे मेल मानू जी आम फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज दौचे आम सोसाइटी से फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज आम गर्ल्स मानू दौने फीमेल मानू दौने तो से सेंस आम सोसाइटी केमती डिस्क्रिमिनेट करुच्ची सोसाइटी केमती फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज को कौन कर कमे दूसरी गर्ल्स मानकर से सेंस रे क्वेश्चन पचरा जाइए पॉलिटिकल कदापि हेनी सो राइट आंसर विल बी दैट इज सोशल ओके वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन Why do people value non-material things in life? Why do people value non-material things in life? Because हमें डिस्कस करते okay, non-material things ये हमें मेजर कर परिवानी बट ये हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ को कौन करे ना इम्प्रूव करे सो बिकॉज दे इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कैनॉट बी बॉट विथ द मनी या कोई मनी द्वारा परचेस कर परिबा नहीं नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हेल्प्स decide whether a development idea is just and fair okay which of the following question helps ए भितर को क्वेश्चन टे हमको हेल्प करिवो कोथरे ना डिसाइड whether developmental idea is just or fair देखिबा developmental idea टी just and fair के देखिबा will it benefit a large number of people yes इठो हम जानि परिबा जे development just and fair की will it increase the income of the top businessman ना ये गोटे क्वेश्चन नो will it benefit only the cities no will it avoid the democratic process no तो will it be benefit large number of people always remember development कहले कौन से सिंगल पर्सन का डेवलपमेंट को बुझाए नहीं ऑल राउंड डेवलपमेंट हवा दरकार एंड विथ दैट एवरी टाइप्स ऑफ पीपल एवरी सोशल ग्रुप्स से कंट्री रे रोथवा से स्टेट रे रोथवा प्रत्येक व्यक्तिंकर क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप हवा दरकार सो डेवलपमेंट or will it benefit the large number of people that is the right answer right question कि हमें डिसाइड करि परिबा whether development is just and fair कि नो okay so that will be the right answer option A
Then next question number 4, why is average income prefer over total income? Just पूर्व स्लाइड आम डिस्कस कले टोटाल इनकम रो लिमिटेशंस जो को ओके आमे कहा को कंसीडर करछे बेटर बोली ना एवरेज को टोटाल इनकम रे कोन होची ना आमे पॉपुलेशन को कंसीडर करू ना हूं ओके डिफरेंट कंट्री रो पॉपुलेशन कोन थाए वेरी करे एंड इन दैट केस कंट्री ए एंड कंट्री बी कंट्री ए रो भी सपोज नेशनल इनकम 1000 कंट्री बी रो भी सपोज नेशनल इनकम 1000 आमे केमित कहबा ए अधिका डेवलप ना बी तो ए केस रा मु कंसीडर करिया पड़िबो पॉपुलेशन यदि ए कंट्री पॉपुलेशन 5 एंड बी कंट्री पॉपुलेशन 10 then आमे कहि परबा कंट्री ए इज डेवलप सो बिकॉज कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन टोटल इनकम गोटे प्रॉपर इंडिकेटर नुह डेवलपमेंट सो that is the reason because of which we are prefer average income over the total income. So right answer will be option B. Two countries have identical per capita income. Suppose dita country ro per capita income kono na same. Then one has very unequal income distribution while the other has more equal distribution. So which one likely to provide a better standard of living? Okay. आमे पढ़ी पर कैपिटा इनकम रो ये होची कोन ना लिमिटेशन जेमते टोटल इनकम रो लिमिटेशन होची ये पॉपुलेशन को कंसीडर करेनी पर कैपिटा इनकम रो प्रॉब्लम कोन ना इट हाइड डिस्पैरिटीज ओके ये इनकम इनइक्वालिटीज को शो करि पारे नाही तो कहा जाउची पर कैपिटा इनकम बोथ कंट्री रो सेम किंतु गोटे कंट्री रे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टी बहुत अनइक्वल आ गोटे कंट्री रे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टी बहुत इक्वल तो क्या आम कहवा किए बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे पार ओब्वियसली जो इनकम टी कौन है इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट होती जोटे डिस्पैरिटीज नाही सो द वन विथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दैट विल बी द राइट आंसर अगेन मु कहूँ टेबल नंबर 1.2 जाई देख ओके न बुझी पार्छ गो थ्रू माय वीडियो ए कांसेप्ट क्लियर हो जिवो एबे डिस्कस करबानी बहुत समय जिवो नेक्स्ट इज एवरेज कैन बी मिसलीडिंग चूज द एप्रोप्रिएट ऑब्वियसली एवरेज मिसलीड करि पारे केते बेले ना जेते बेले विभिन्न कंट्री रो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सेम न थाए काहे कि ई कोन रिफ्लेक्ट करेनी इनकम डिस्पैरिटीज सो एवरेज डू नॉट रिफ्लेक्ट how income is distributed among the people so in that case okay average भी हमको mislead करी पारे okay the next question number 7 that is even though Punjab has higher income than Kerala अपेक्षा पंजाब रो इनकम अधिका बा सत्ते भी हमें केरला को काहे की कंसीडर करछे as more developed okay as you can remember तांकर health status okay then education status or you can say public facilities बहुत कम थिला ना बेटर थिला okay I think you can remember it so it has more company no it has lower infant mortality rate and higher literacy yes that will be the right answer because of the good education and health their infant mortality rate is low and literacy rate is very high and that is the reason because of which even though Punjab has higher income than Kerala is considered more developed okay next is what does net attendance ratio refers to ओके नेट अटेंडेंस रेशियो जमती डिस्कशन समय कही आम डिफरेंट कैटेगोरी ऑफ चिल्ड्रेन मानकर आम नेट अटेंडेंस रेशियो आम फाइंड आउट करिपरिबा ओके गोटे पर्टिकुलर एज ग्रुप रो चिल्ड्रेन मानकर टोटल चिल्ड्रेन जहाँ गोटे पर्टिकुलर एज ग्रुप रे जति टोटल चिल्ड्रेन थिबे सेमानक भितरु केते परसेंटेज ओके से माने स्कूल अटेंड करूचंदी दैट इज द नेट अटेंडेंस रेशियो ओके ए डेफिनेशन टी 6 to 10 ईयर ऑफ एज ग्रुप मानक पई सो चिल्ड्रेन एज बिटवीन 6 to 10 school attending school as a percentage of total children in that group okay we can again I am telling you जे आम नेट अटेंडेंस रेशियो डिफरेंट एज ग्रुप रो पिलांकर काउंट कर परिबा एठी कहा जाउची जे गोटे पर्टिकुलर एज ग्रुप एठी कंसीडर कराइछि 6 to 10 टोटल 6 to 10 एज ग्रुप रो टोटल केते चिल्ड्रेन अछन इंडिया रे एंड सेमानक भितरु केते परसेंटेज स्कूल जाउछन ये प्रोवाइड करछि नेट अटेंडेंस रेशियो ऑफ चिल्ड्रेन एज बिटवीन 6 to 10 so that will be the right answer next why is it cheaper and better to provide many services collectively rather than individually okay you know that
केवल आमको पब्लिक सर्विसेज ही आमको केमती मिले ना कलेक्टिवली मिले, इंडिविजुअली मिले जमती आम कह रोड ट्रांसपोर्ट, ओके, रेलवेज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एनवायरनमेंट, ये सब तो एगुड़ा को आम कलेक्टिवली कहीं दू, इंडिविजुअली कहीं दू ना, आ पछरे दुईटी मेन रिजन था। गोटे हूँ कॉस्ट आमको कम पड़े एंड सेकेंड थिंग हूँ आम समस्त को प्रोवाइड करें, एवरीवन नीड्स इट, समस्त ही आवश्यक। ओके, सो राइट आंसर विल बी बिकॉज एवरीवन कैन एक्सेस education, health and security at lower cost. That is the reason because of which why is it cheaper and better to provide many services collectively rather than individually. से आम कहूचे किसी सर्विसेस अच्छी जमती हेल्थ सिक्योरिटी ये सब को आम इंडिविजुअली न दे जो आम कलेक्टिवली तो ओके ये आमको कौन रुहे ना चीपर रुहे, बेटर रुहे टू प्रोवाइड सच सर्विसेस। नेक्स्ट वन इज a girl in a village is unable to study because there is no school nearby. This shows that what it shows, okay, adequate public services nahi, that's why a girl in a village is unable to study, so public facilities are not adequately provided. That will be the right answer. What makes it possible for you to study in school according to the test? Okay, in which case को case रे पॉसिबल हम गोटे व्यक्ति पाखे सी स्कूल रेगुलारली जापर पढ़ी पार, केवल रिच है यू आर रिच, योर पेरेंट्स नो इंग्लिश, से केस ही पॉसिबल। मेनी अदर ऑल्सो वांट टू स्टडी एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड स्कूल एंड देर आर नो प्राइवेट ट्यूशन ना, ये गोटे रीजन नो। सो राइट आंसर विल बी कौन ना तमें जो सोसाइटी रोच से सोसाइटी थिबा अन्य लोक मैंने भी पढ़ाई कौन थे ना इंटरेस्टेड, तासह गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करुथबो कौन ना फैसिलिटीज, को फैसिलिटीज ना एजुकेशन फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी, देन ओनली इट इज पॉसिबल फॉर अस और फॉर यू टू स्टडी according to the text. Okay, that will be the right answer. Next, what is the relationship between PDS performance and health nutrition in a state? Okay, you know that PDS means public distribution system. न्यूट्रिशियस फूड लोक मान पाखे पहुँचेबारे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे, गोटे फूड चेन रोल, फूड चेन ओके बा इंडिया रे फूड चेन को बहुत प्रॉपर्ली एफिशिएंटली वर्क करिवारे पीडीएस बहुत हेल्प करे। तो ऑब्वियसली जदि न्यूट्रिशियस फूड लोकों पाखे पहुँची पारला, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से स्टेट कौन हम इम्प्रूव हम। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू? नो रिलेशन एट ऑल, नो। पोर पीडीएस इंक्रीज income, no. Well functioning of PDS improve health and nutrition, so this will be the right answer. Okay, then despite being a smaller country, why does Sri Lanka rank higher than India? Okay, remember Sri Lanka rank human development index रे इंडिया अपेक्षा अधिका कहीं, because it has more natural resources, no. इंडिया रे बहुत natural resources अच्छी, because it has higher income only, no. It performs better in education and health indicator, it is a tourist destination, no. Right answer will be जे तांको कंट्री रो एजुकेशन एंड हेल्थ स्टैंडर्ड आम अपेक्षा बेटर। ओके, आम अपेक्षा बेटर होगा पछरे बहुत अन्य रीजन भी अच्छी। ओके, जदि आम टेरिटोरी देखा जोग्राफिकल टेरिटोरी, इंडिया इज ए वेरी भास्ट कंट्री। ओके, श्रीलंका नुह। देन आसला पॉपुलेशन को भी आम कंसीडर जदि करबा, इंडिया रे पब्लिक सर्विस थ्रू आम एजुकेशन प्रोवाइड करवा लिटिल बिट चैलेंजिंग एज कंपेयर टू द श्रीलंका। तो ये सब फैक्टर को जब आम साइड करवा, देन जस्ट कंसीडर करवा हेल्थ एंड एजुकेशन स्टाटस, देन श्रीलंकार स्टाटस आम अपेक्षा बेटर। दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच श्रीलंका रैंक हायर देन इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट इज व्हाई डू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट बाउंड्री? ओके, पाकिस्तान रो लोक मैंने पॉल्यूशन करेंगे ता द्वारा कौन इंडिया लोक अफेक्ट हेबे नी? इंडिया रो लोक एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेंगे कौन वर्ल्ड रो अन्य कंट्री लोक मैंने द्वारा अफेक्ट हेबे नी? अफेक्ट हेबे कहीं ना बिकॉज जो एनवायरमेंट डिग्रेडेड हुए से कौन सी नेशनल बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट दिए ना, कॉन्सिक्वेंसेस किए हो गए पूरा होल वर्ल्ड। ओके, बिकॉज द अफेक्ट जिते एनवायरमेंट डिग्रेडेड हुए से कौन हुए सी पूरा टोटाल वर्ल्ड रो एयर वाटर क्लाइमेट एवरीथिंग को कौन करे ना अफेक्ट करे, ये नेशनल बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट दिए नहीं। सो दैट विल बी द राइट आंसर।
Why is sustainability of development considered a shared responsibility across the nation? Okay, sustainable development goal जो 17 I think 17 sustainable development SDG goals are there. जदि SDG goal गुड़ी को देखिबो, okay, without mutual cooperation, okay, cooperation आमे sustainability of development achieve करि परिबा नाही. Okay, it is a shared responsibility. So let's see why. All countries have the same GDP? No. All leaders agreed on one goal? No. Environmental issues like pollution and climate change affect everyone globally. It is easier to pass laws globally? No. Right answer will be जेहेतु एनवायरमेंटल डिग्रेडेड हेले बा पोल्यूशन हेले बा जेतले क्लाइमेट चेंज हुए आ द्वारा कौन सी जणे अफेक्ट हुए पूरा होल वर्ल्ड जेहेतु अफेक्ट हुए, दैट्स व्हाई इट इज शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन अक्रॉस द नेशंस so that we can achieve the sustainability of development. Okay, so now let's see competency based questions. अब हम किछटा competency based questions देखिबा. First one, a urban girl from rich family wants both good education and personal freedom. What does this suggest? कौन suggest करछि देखिबा. Development is only about material gain? No. Material and non-material both. Income alone ensures satisfaction? No. Non-material goals are also important. देखो ये कौन कहा जाउछि ना उडा अर्बन गर्ल रिच फैमिली रा से गुड एजुकेशन सह से पर्सनल फ्रीडम भी चाउछि. एंड यू नो दैट फ्रीडम, डिग्निटी, रेस्पेक्ट ये सब आउछि कोन ना नॉन मेटेरियल गोल्स. एंड यू नो दैट फॉर डेवलपमेंट आमको कौन दरकार बोथ मेटेरियल एंड नॉन मेटेरियल गोल्स हमर फुलफिल हेबा दरकार. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. Which of the following best explain the meaning of conflicting developmental goal? Okay, conflicting developmental goal को की best explain करछि. So let's see. When people of different states demand development? No. When people ask for different things in different times? देखिबा confusing feel होछि. When the fulfillment of one's development harms another? When only government decide development priorities? कौन कहा जाउछि ना when the fulfillment of one डेवलपमेंट हार्म्स अदर जेतेबेले जनकर डेवलपमेंटल गोल फुलफिल हेबा द्वारा अन्यर कौन हुए क्षति हुए ए केस रे हमें कहि परिबा हियर द डेवलपमेंटल गोल इज कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर. ओके, मन पकाओ इंडस्ट्रियलिस्ट कथा में देखथिले. ओके, एंड हमें ट्राइबल पीपल मानकर एग्जांपल लेके हमें डिस्कस करथिले. ओके, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. द नेक्स्ट, ए लैंडलेस रूरल लेबरर prefers to more days of work and better wages. जने लैंडलेस रूरल लेबरर कौन प्रिफर करे more work more wages. Which kind of development does this represent? Economic development only, need based development, political development and urbanization. ये तो relevant ही नहीं. ओके, क्वेश्चन सहित ही relevant नहीं. हटा political development ये भी नुह, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किंबा नीड बेस्ड डेवलपमेंट. सो ए लैंडलेस रूरल लेबरर जेते बेले अधिका काम चाहे बेटर वेजेस चाहे. ओके, आ द्वारा एमिति तार गोटे बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए नहीं. ओके, ये केवल तार नीड को ही फुलफिल कराए. तो बिटवीन ए एंड बी, ओके, जदि बी न था देन ऑब्वियसली ही था. जेतु बी अच्छी देन आई थिंक नॉट आई थिंक हाँ राइट आंसर विल बी need based development. Okay, Ravi gets a job offer with high salary, okay, but no job security and a toxic work environment. What would be the wise developmental goal for Ravi to prioritize? हमें जानी चाहिए high salary माने material goal, job security and toxic environment ये आसीगला हमारा non material goal. तो रवि कहाँ को prioritize करिवा दरकार? High salary only, distance from the home, security, work life balance and learning opportunity, number of holidays in the year. Obviously with ताको सैलरी मिलुची बट जॉब सिक्योरिटीज नहीं, वर्क एनवायरनमेंट नहीं, कौन लाभ से सैलरी रो. ओके, आज जॉब अच्छी काली जॉब थिबो कि नहीं कौन गारंटी. ओके, तो से केस रे सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस देन लर्निंग अपॉर्चुनिटी, दिस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द Ravi. 5. A group of industrialists wants a large highway built through a forest.
Okay, while environmentalists want to protect wildlife. What does this situation represent? ये conflicting developmental goal को show करছে देखिबा mutual agreement no, uniform development no, conflicting ideas of national development yes. आम एग्जांपल नहीं थिले डैम रो ओके इठे एग्जांपल दिया हिचे हाईवे रो अदरवाइज कंप्लीटली सेम सेटे देथिले ट्राइबल मानकर एग्जांपल नहीं थिले इठे नहीं हिचे एनवायरमेंटलिस्ट ओके सो इट conflicting in nature. इंडस्ट्रियलिस्ट माने चाहते हाईवे हो बट एनवायरमेंटलिस्ट कहते जहाँ द्वारा आमर वाइल्ड लाइफ नष्ट हम सो दे वांट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ सो दिस इज कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट. नेक्स्ट, इफ ए डेवलपमेंट प्लान इन ए कंट्री गिव्स बेनिफिट टू ओनली टू स्मॉल रिच ग्रुप व्हाट कैन वी कंक्लूड. जदि डेवलपमेंट हेबा द्वारा डेवलपमेंट प्लान द्वारा केवल गोटे स्मॉल ग्रुप ऑफ रिच पीपुल ही डेवलप होती देन आपको आम डेवलपमेंट ही कहवानी कहीं मुझे कौन कही ना एव्री सेक्शन एव्री पीपुल समस्त डेवलपमेंट हवा दरकार. ओके, इट इज ए फेयर पाथ ऑफ नेशनल डेवलपमेंट नेवर. इट इज एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज जीडीपी इंक्रीज नो. इट इज अनजस्ट एंड एक्सक्लूड्स द मेजोरिटी यस. ये कम्प्लीटली अनजस्ट आम पढ़ते ना कौ टाइप डेवलपमेंट को आम फेयर एंड जस्ट कहवा ना जिते डेवलपमेंट द्वारा डेवलपमेंट प्लान द्वारा समस्त डेवलपमेंट हो. ओके, तो ये तो कहला केवल स्मॉल रिच ग्रुप कर ही डेवलप कराऊे. ओके, मेजोरिटी को एक्सक्लूड कर दौचे. द नेक्स्ट इज कंट्री ए हैज टोटल इनकम 50,000 एंड पॉपुलेशन 100 crore. कंट्री बी हैज टोटल इनकम 10,000 and population 1 crore. Which country is better off? Okay, I mean better off को country जानिबा केमते. Now we have to calculate what ना average income. So average income is average income is equal to total income divided by total population. Okay, this is the common method. So 500 crore average income आसी वाला केते ना that is 500 crore. को केस लेना कंट्री ए एंड कंट्री बी 10,000 crore डिवाइडेड बाय 1 crore. तासी वाला कहते हैं ना 10,000 crore इन कंट्री बी. सो को कंट्री अधिक डेवलप ए और बी. सो ऑब्वियसली कंट्री बी. ओके, बहुत इजी अच्छी डिफिकल्ट पे आसी पारे भावन जो मैं थोड़ी आसो है. A student says that total income of a country is a better indicator of development than average income. What student coach say total income of the country got a better indicator as compared to the average income. What is the flaw in this argument? ये wrong. कहीं कि ना total income better नुह कहीं ना ये population को consider करने में पड़ी जे ना. तो देखिए statement में कौन flaw अच्छी कौन problem अच्छी. Total income cannot be calculated only by the World Bank. No. Sorry, total income can be calculated only by the World Bank. No, total income hides income distribution and population size. Yes, this is the right answer. Okay, ये income distribution को भी show करूँ नहीं कि population size को भी consider करूँ नहीं and that's why we can say it is a flaw statement. Okay, we can't say कि total income is better indicator as compared to the average income. Next, why might a person prefer to live in country A over country B? Even if average income is same in both. It means country A and country B रा average income कौन कह जाउची ना same. तो कहीं की जने prefer करिबा country A रे रहबा पई country B रे नो. देखिबा कौन ना because A has no taxes, because income distribution in A is more fair, because B has more people, because B is richer. Okay, कहीं की जने पसंद करिबो जे country A रे रहबा पई कहीं की ना A रे tax नो ना ये दुटा तो टोटल आंसर हेनी सी डी बिकज ए कथा पचरा जदि आम बी को जदि आम ए बी भितर देखा कौड़ा राइट आंसर जे गोटे कंट्री रे टैक्स ना से लोग प्रिफर करेंगे ना. सेकेंड हूँ जे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इट मीन्स इनकम इनइक्वालिटी बहुत फेयर बेटर. तो ऑब्वियसली ए बी भितर बहुत एप्रोप्रिएट आंसर हो हाँ किसी पिला थे सी कहे ना सर ये कंट्री मत टैक्स देवाक पड़ोनी दैट्स व्हाई ए इज बेटर. हाँ यू नो दैट दुबई आमको टैक्स देवा पड़ेनि से किसी इंडियंस मैंने चली जाते. हाँ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को जीवानी वो जान तो ये भी ऑप्शन हो पार बट राइट आंसर विल बी दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो कंट्री रे इनकम डिस्पैरिटी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत
लो थिबो ओके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फेयर थिबो विल prefer that country, and that is the reason because of which people will prefer to live in country A. The next, if Bihar has a literacy rate of 47% and net attendance ratio is 41%, what does this imply? कौन imply करछि? Net attendance ratio, education status low 41%, literacy rate, education status low. The education system is strong. Children in Bihar have high access to education? No. A large number of children do not attend school? Yes. There are more schools than students? No. तो कौन जाना पड़छि ना education standard low, large number of children school जाऊ ना, that's why literacy rate low, that's why net attendance ratio is low. If a country uses only income as the criterion for the development, what might it overlook? जदि केवल आम income को ही consider करिबा as the criterion ताले कौन problem हबो ना क्या ओवरलुक कर टोटाल प्रोडक्शन को? नो. एम्प्लॉयमेंट रेट हाँ ही पारे एम्प्लॉयमेंट रेट को ओवरलुक कर. नॉन इनकम इंडिकेटर्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ जीडीपी ग्रोथ. देखो ऑप्शन बी एंड सी बोथ राइट आंसर हम. बट कंपैरेटिवली जब आम कहवा जो आम ओनली इनकम को कंसीडर करते आज द क्राइटेरियन फॉर डेवलपमेंट नॉन इनकम इंडिकेटर्स तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आम क्या अंडर आसता है ना नॉन इनकम इंडिकेटर्स अंडर आसता है. सो ब्रोडर सेन्स आम कहीपर C is the right answer. Okay, education, health, unemployment rate ये सब से कंसीडर करें नहीं. तो B C both right answer हम. C नथले B था बट जेहेतु C अच्छी B already C अंडर ही आसुची नॉन इनकम इंडिकेटर अंडर एम्प्लॉयमेंट रेट भी आसुची. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन C. A girl in a village is unable to study because there is no school nearby. What it shows that public facilities are not adequately provided. Okay, I think I am a question discuss quality understanding this under. What makes it possible for you to study school according to the text? अरे question कौन repeat है ये? Okay, sorry, बोलवा से तो repeat है ये. Both question that is many other also want to study and the government provides school. पूर्व discuss करते question repeat है ये. Next. Which of the following best explain why Kerala perform better in health indicator? Not only in health, Kerala performance health रे भी better, education रे भी better. Okay, कहीं better? ना कहीं public facilities better. Okay, answer देखिए high population, high income inequality, focus on public health and education. Yes, focus on Kerala पब्लिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ एजुकेशन को ये बहुत प्रायोरिटी दिए बहुत फोकस करे. दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच केरला बहुत बढ़िया परफॉर्म करे हेल्थ इंडिकेटर्स. ओके नेक्स्ट इज इफ ए स्टेट हैज पोर एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज लाइकली टू हैव व्हाट जदि एजुकेशन पोर एजुकेशन अच्छी देन कौन रहिबो लिटरेसी रेट कौन रहिबो लिटरेसी रेट एंड आईएमआर विषय कंपेयर कराइछि. लिटरेसी रेट रहिबो लिटरेसी लो रहिबो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जदि भी पोर रहा ताले हमर आईएमआर कौन रहिबो ना हाई रहिबो. देखो आईएमआर कोठा छै हाई आईएमआर लो लिटरेसी. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट मैसेज डज द इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कन्वे? ओके व्हाट मैसेज डज द इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो ह्यूमन वाट यूज करा जाउची कौन कन्वे करछि. सो लेट्स सी दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोस्ट इंपोर्टेंट, द मिलिटरी स्ट्रेंथ इज वाइटल, दैट सिटीजन वेलबींग एजुकेशन हेल्थ मैटर द मोस्ट. यस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आम फोकस करछे क्या ना आम ह्यूमन को सिटीजन को फोकस करछे से एजुकेशन स्टैंडर्ड से हेल्थ स्टैंडर्ड केते बेटर. तो आम हेल्थ एंड एजुकेशन सिटीजन मानकर बहुत मैटर करे एंड दैट्स आम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करछे. तो दैट विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट why is HTA considered a composite index? Okay, आपको मैं कहेंगे कुछ composite index ना because it cover multiple aspects. Okay, composite रो meaning करना बहुत कुछ attributes बा बहुत कुछ indicators की use करे. Okay, health status, education status, income. So it cover multiple aspects. That's why you can say it is a composite index. Okay. The next, why future generations be considered when planning development today? Okay, to attain sustainable development. Yes or no? देखिए कौन क्वेश्चन ऑप्शन में कौन से देखिए पड़ो. They will vote in election. No. They will inherit the results of today's decision.
हाँ हो पारे देखिबा दे डिमांड लोअर टैक्सेस नो दे विल प्रोड्यूस मोर फॉसिल फ्यूल नो राइट आंसर विल बी कौन कह जाउचे आमे फ्यूचर जेनरेशंस को भी कंसीडर करबा दरकार प्लानिंग समय कहीं ना आज आम जहाँ डिसीजन नहीं ओके तार फल को मैंने भोगे तार कन्सिक्वेंसेस क्या पड़ो ना फ्यूचर जेनरेशन दैट्स व्हाई दे विल इनहेरिट द आउटकम्स ऑफ टुडेज डिसीजन आज आम जहाँ डिसीजन नौचे आज आम जो प्लानिंग करछे तार फल भोगे कि तार आउटकम बा तार रिजल्ट्स को इनहेरिट करेंगे कि आवर फ्यूचर जेनरेशन एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू बी कंसीडर व्हेन वी प्लानिंग डेवलपमेंट टुडे नेक्स्ट if a country uses its resources without caring for the future what will likely happen कौन हम सेम कॉन्सेप्ट ऊपर बेस कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आम अचीव करें फ्यूचर जेनरेशन रिसोर्सेस पाइबेनी इट विल फेस रिसोर्स शॉर्टेज रिसोर्स स्कार्सिटी रहिबो ओके से नीड को फुलफिल करने एडिक्वेट रिसोर्सेस पाइबे ना ए कंट्री डिस्कवर्स ए न्यू ऑयल फील्ड व्हाट कैन दिस बी सीन एज ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू एनर्जी नीड देखिबा गोटे न्यू डिस्कवर होइछि गोटे न्यू ऑयल फील्ड व्हाई कैन दिस बी सीन एज ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू एनर्जी नीड तो गोटे न्यू ऑयल फील्ड हमको मिलगला ता माने कोन हमर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिलगला एनर्जी नीड्स को नहीं कि कहीं गोटे प्रॉपर सॉल्यूशन नुह कहीं ना बिकॉज ऑयल इज चीप नो बिकॉज ऑयल कैन नॉट बी स्टोर्ड नो बिकॉज इट इज स्टिल ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड विल इवेंचुअली रन आउट यस केते ऑयल फील्ड मिलू केते आम रिसोर्स रिच होना कहीं बसी खाइले नई बारिशे ये गोटे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस दिने ना दिने ये रन आउट हम ही हम ओके दैट्स व्हाई इट कैनॉट बी सीन एज ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू द एनर्जी नीड हाँ सर्ट टर्म आमको गोटे वे मिलगला नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नो mining without regulation no using solar panel and deforestation yes that will be the right answer burning more coal no ये तीनटा A B C all case रे कौन होचे आम रिसोर्सेस को केयरलेसली यूज करछे ओवर यूज करछे बट यूजिंग सोलार पैनल डिफोरेस्टेशन आ द्वारा आम सस्टेनेबल गोल को अचीव कर परिबा नेक्स्ट इज व्हाई इज द करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट कंसीडर्ड ऑन सस्टेनेबल बाय साइंटिस्ट करेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट को आम कहीं अनसस्टेनेबल कहूचे कहीं इट फोकसेस ओनली ऑन एग्रीकल्चर नो इट इंक्रीज लिटरेसी नो आर किसी लेना देना ही नहीं इट ओवर यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस यस नाउअडेज एवरी कंट्री प्रत्येक कंट्री नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को आम बहुत यूज आम कभी यूजली आम कहीपर केयरलेसली आम बहुत ओवर यूज करछे एंड दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच द करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैनॉट बी कंसीडर्ड एज अ सस्टेनेबल ओके आम तो कहीपर इट इज ए अनसस्टेनेबल इन नेचर व्हाई शुड डेवलपमेंट बी सस्टेनेबल कहीं सस्टेनेबल हेबा दरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेफिनेशन पका टू एन्श्योर रिसोर्सेस आर अवेलेबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन दैट्स व्हाई डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल इन नेचर ओके नाउ लेट्स सी सम skill based questions okay first one that is suppose the government decides to build a dam which provides electricity to industries but displaces hundreds of tribal families what does this situation highlight ये कौन highlight करछि ना development goals can be conflicting in nature okay देखो students ए क्वेश्चन गुड़ाक रिपीट होइछि कॉन्सेप्ट रिपीट होइछि बट क्वेश्चन रिपीट हेनी ओके तो ये बारंबार प्रैक्टिस करबा द्वारा तमर कॉन्सेप्ट भी मन रही जीवो सेकंड थिंग क्वेश्चन सेम नुह ओके देखो क्वेश्चन रो नोशन चेंज होइछि ओके इट इज स्किल बेस्ड क्वेश्चन आछि बट से क्वेश्चन देखो बहुत क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट ऊपर बेस बट क्वेश्चन पचारिबा जो ढंगटी चेंज होइछि ओके गोटे डिफरेंट वे रे क्वेश्चन को पचरा होइछि एंड दैट्स व्हाई मुझे ये क्वेश्चन गुड़ा को ऐड करछे सो दैट यू शुड नो कि हाउ डिफरेंटली कैन बी क्वेश्चन केमती पचरा जाई पारे ओके तो तापर गोटे आइडियाज डेवलप हम नेक्स्ट व्हाई इज इट सेड दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल ओके व्हाई इज इट सेड दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल ये कहीं कह जाउछि ना कहीं ना डिफरेंट पीपल मानकर नीड एंड प्रायोरिटीज कौन ना डिफरेंट दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच वी आर टेलिंग दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स देखो अगेन कहूँ कॉन्सेप्ट सेम बट द वे क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कंप्लीटली डिफरेंट ओके नेक्स्ट इफ टू कंट्रीज हैव द सेम टोटल इनकम बट डिफरेंट पॉपुलेशन हाउ कैन वी फेयरली कंपेयर देम
Okay, the best way is just find out the per capita income, otherwise we can't say. Okay, देखो क्वेश्चन केमती डिफरेंटली पचरा जाउछि, सेम कांसेप्ट पर कैपिटा इनकम, प्रॉब्लम, इश्यूज एवरीथिंग आम डिस्कस करछे, टोटल इनकम रो पर कैपिटा इनकम एवरीथिंग. ओके, बट ये क्वेश्चन टी केते डिफरेंट वे रे पचरा जाइछि. ओके, दैट इज वेरी इंपोर्टेंट. द एवरेज इनकम ऑफ टू कंट्रीज, ओके, इज 60,000 इन 60. द एवरेज इनकम ऑफ टू कंट्री, दीटा कंट्री रा एवरेज इनकम होछि सेम 60,000, बट इन कंट्री ए everyone on 60,000, but in country B, one person 3 lakh and another person 30,000. It means in country A, income distribution is completely equal, but in country B, income distribution is completely unequal. So, what it indicate? Both countries equally developed? No. Country B is more developed? No. Country A has more equal distribution and is better for most of people? Yes, that is the right answer. Okay. Next, which of the following sets of data reflect balanced development? Okay, ए डाटा रो हम देखिबा कोडा balanced development को शो करछ. देखिबा per capita income, infant mortality rate and literacy कंपेयर करै छी. लिटरेसी कोन होबा दरकार? हाई. infant mortality rate कोन होबा दरकार? सॉरी, infant mortality rate कोन होबा दरकार? लो. एंड पर कैपिटा इनकम होबा दरकार हाई. तो देखिबा हाई पर कैपिटा इनकम, लो आईएमआर एंड हाई लिटरेसी. सो दिस इज द राइट आंसर. पर कैपिटा इनकम हाई होबा दरकार, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कोन शो करछि, जेते आईएमआर लो होबो सेतिके हमर हेल्थ स्टेटस बेटर, जेते लिटरेसी हाई होबो सेतिके हमर हेल्थ स्टेटस बेटर, जेते हमर पर कैपिटा इनकम हाई होबो सेतिके हमर लिविंग स्टैंडर्ड बेटर. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. ओके, देखो क्वेश्चन कांसेप्ट सेम, क्वेश्चन केते डिफरेंटली आछी. ओके, that is the main motto कि मैं इस क्वेश्चन को ऐड करछि. नेक्स्ट, why is Kerala considered better performing state despite not having the highest per capita income? Because it ensure better health and education to most of the citizen. Which of the following situation highlight the need of collective effort in public facilities? Need for collective effort of public facilities, because in some situation, okay, without collective effort, without mutual help, आमे से पब्लिक फैसिलिटीज को आमे अचीविंग करि परिबानी. ओके, सो बेस्ट एग्जांपल हियर एज यू कैन सी, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेस थ्रू द कम्युनिटी सैनिटेशन. ओके, बेस्ट एग्जांपल कोरोना. ओके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बिना कोरोना को आमे कंट्रोल करि पारथांदे? नेवर. ओके, सो राइट आंसर विल बी सी. इवन इफ यू हैव एनफ मनी, व्हाई माइट यू नॉट गेट क्लीन वाटर and good health services? Okay, कहीं ना क्लीन वाटर, हेल्थ सर्विसेस ये डिपेंड करे कहाँ पर ना, इट्स डिपेंड्स ऑन कम्प्लीटली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. विदाउट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आमे केबे भी सब अचीव करि परिबा नाही. ओके, दैट्स व्हाई तुम पार केते भी मनी थाउ ना कहीं जे तुम सोसाइटी डेवलप न हो, जे तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जगह रे तुम रहू ना हो, केते भी मनी थाउ तुम सब को एक्सेस करि परिबा नाही. ओके, next, which of the following best explains the ongoing debate on development? कौन ongoing debate चलछि देखिबा. Everyone agrees on one model of growth? No. Development goals are static and unchanging? No, it is completely dynamic. Societies constantly rethink that kind of progress they want. Development ends when the country become rich? ना, development केबे भी end होइनी, गोटे हमर विश फुलफिल हेले आउ किछि अधिका चाहिबा. सो राइट आंसर इज सोसाइटी कॉन्स्टेंटली रीथिंक करे, कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट को लेके न्यू न्यू आइडियाज जनरेट करे. सोसाइटीज कॉन्स्टेंटली रीथिंक व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस दे वांट. गोटे हमर एम अचीव होला मैं नेक्स्ट चाहिबा. ओके, सो डेवलपमेंट रो केबे एंड नाही. ओके, सो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. नेक्स्ट, how can individual contribute to sustainable development in their daily life? केमती ना हमको fossil fuels कम करिवार अछि, हमको अवेयरनेस क्रिएट करिवार अछि. ओके, हमको फ्यूचर जनरेशन प्रति हमको अवेयर हेबार अछि. सो रिड्यूसिंग, रीयूजिंग, रिसाइक्लिंग, 3 R's. ओके, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी. दिस इज द वे बाय व्हिच यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, एंड देन assertion and reason based question. ओके, एभली देखो इसे आम जी भी डिस्कस करचे आपण मैंने बुझी सारी कि ये चैप्टर टी कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग बेस. ओके, इनफॉरमेशंस बहुत कम अच्छी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी. जन जदि कॉन्सेप्ट को आराम रे बुझी जाउछि ना, ये चैप्टर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन
करि परिबो तो एभली कॉन्सेप्ट बेस चैप्टर मानकरू assertion and reason based question आसीबार चांसेस वेरी हाई ओके दैट्स व्हाई ए चैप्टर बहुत assertion and reason based क्वेश्चंस अछि जाको कि मु सेपरेटली गोटे ग्रुप कर दी सो लेट्स सी मुश्किल अंडर रे रखी नाही assertion different persons can have different developmental goal करेक्ट ओके करिया पूर्व मु कहि देबी आमे केमते assertion reason based question को आमे चेक करिबा फर्स्ट assertion ठीक करेक्ट अछि कि नै देखिबा देन reason करेक्ट अछि कि नै देखिबा देन जदि बोथ भितरु कि गोटे करेक्ट रहउची गोटे फॉल्स रहउची ताले हमर ऑप्शन सी कि डी हो आंसर नै जदि बोथ करेक्ट रहउची हमु देखिबार अछि जे आर गोटे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की एर ओके सो मु डिटेल्स दिबि ने केवल assertion reason दिबि बोथ देखिबि करेक्ट कि नुह एंड मु देखिबि आर assertion रा गोटे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि नुह एति डिस्कस करिया मु नेक्स्ट क्वेश्चंस को जिबि ओके सो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल करेक्ट व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन that may be the destructive for other yes conflicting developmental goal both are correct and R is the correct explanation of a prosperous farmer and a landless laborer may have conflicting developmental goal हाँ ही पारे मानकर developmental goal conflicting ही पारे a prosperous farmer may want cheap labor गोटे prosperous farmer चाहतो जे मते कम रेट रे लेबर मिल जाओ बट लेबर चाहतो कोन कि हायर वेजेस तो ये एग्जांपल कौन है ना कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल रो ये एग्जांपल इट मींस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ओके द नेक्स्ट कांसेप्ट केते बुझिছো एंड क्वेश्चन को तमे केते बेटर कंप्रेहेंड कर पाछो दैट इज एनफ टू गेट द व्हाट ना द राइट आंसर नेक्स्ट A boy and a girl may have conflicting developmental goals. Yes, रही पारे. A girl may want gender equality while the boy may resist sharing household responsibilities. Yes, ये again conflicting developmental goal example. So both and R are true. R is the correct explanation of A. Developmental goals are the same for all people. No, developmental goals समस्त ପାଇଁ समान नुह. All people want income only. No, ये भी नुह. तो जदि बोथ रॉन्ग एभली ऑप्शन अछि कि देखिबा पड़िबो बिकॉज़ आमे देखिसे A is true R is false A is false R is true both false ऑप्शन रे अछि कि yes अछि A is false and R is also false this is the right answer okay एभली क्वेश्चन बेल आसे okay don't confuse the next a fair path of national development should benefit a large number of people देखिथिले फेयर एंड जस्ट केते बेले कहबा डेवलपमेंट को में फेयर एंड जस्ट केते बेले कहबा ना जेते बेले ये समस्त लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को बेनिफिट करथो करेक्ट डेवलपमेंट इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन जीडीपी इंक्रीजेस नो जीडीपी इंक्रीज हला में ताको ग्रोथ कहबा डेवलपमेंट नो इट मींस ए इज ट्रू आर इज फॉल्स सी इज द राइट आंसर पर कैपिटा इनकम इज ए यूजफुल मेजर टू कंपेयर कंट्रीज यस इट टेक्स इनटू अकाउंट पॉपुलेशन डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज यस दैट्स व्हाई ए रीजन जो ही आम कहे जे पर कैपिटा इनकम इज ए यूजफुल मेजर तो बोथ ए एंड आर ट्रू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दिस इज द राइट आंसर टोटल इनकम इज ए बेटर मेजर देन टोटल इनकम इज ए बेटर मेजर देन एवरेज इनकम टोटल इनकम बेटर एवरेज इनकम अपेक्षा नो टोटल इनकम इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स हाँ टोटल इनकम सबू सेक्टर इनकम को कंसीडर करे दिस इज राइट किंतु टोटल इनकम गोटे बेटर मेजर नुह एवरेज इनकम अपेक्षा सो ए इज फॉल्स बट द आर इज ट्रू सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर देन 8 कंट्री ए इज बेटर टू लिव इन देन कंट्री बी इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इक्वल इन ए ऑब्वियसली जदि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री ए रे मोर इक्वल देन ऑब्वियसली पीपल प्रिफर करेंगे कंट्री ए रे रहा देन कंट्री बी कहीं इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लीड्स टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल सो बोथ आर करेक्ट यदि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अच्छे देन हमको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल दैट्स व्हाई जदि कंट्री ए रे मोर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होची ऑब्वियसली से प्रिफर करेंगे बी अपेक्षा कोट रहे ना कंट्री ए सो राइट आंसर विल बी both and are true and R is the correct explanation of A. The next is per capita income is not a sufficient indicator of development. Yes, kahinki na because here other criteria like health, education status, distribution of income को show करेनी. So this is completely true.
and this is also completely true, that is it does not reflect health, education and distribution of income. So right answer will be both A and R are true and R is the correct explanation of A. The next, Bihar had the lowest net attendance ratio in 1995-96. Bihar had the highest per capita income. Okay, देखो एक क्वेश्चन को मैं आंसर कहबी ना, कहीं आंसर कहबी नहीं. ओके, ये क्वेश्चन कौन दरकार हमको डाटा दरकार. ओके, एंड एग्जाम रे जदि ये क्वेश्चन आसे मन रखता ऊपर सब बेले कौन देथिबो विथ डाटा. ओके, बिकॉज ऑफ टाइम बाउंड मो पाखे समय कम थिबा जोगो मु से क्वेश्चन को ऐड करिनी, बट इकोनॉमिक्स से प्रायतः टेबल, ओके टेबल चार्ट ए सब दे आ ऊपर क्वेश्चन आसता है. 100% श्योर गोटे दुटा क्वेश्चन ये थिबो. तो चार्ट देथिबो बा लास्ट ईयर बा लास्ट इयर्स मानकर डाटा देथिबो, देन क्वेश्चन थिबो, देन ओनली आमे एभली क्वेश्चन को आमे आंसर करि परिबा. ओके, सो गो थ्रू द बुक, ओके डाटा देखो and tell me what will be the right answer. This is the responsibility of yours. Next is public facilities are necessary for all human development. Yes, public facilities niyati avasyak, correct. Individual income alone can ensure access to all service. No, money द्वारा आमे सब जिनस बाय करि परिबा नाही, आमे पढिचे. So individual income alone cannot ensure access to all services. So A is true but R is false. Right answer is option C. The next, the presence of school, hospital, clean water can be more important than income. Obviously, yes. These facilities promote equality and enhance the quality of life. Yes, that is the reason because of which आमे income अपेक्षा को आमे कौन कहले निहाती important. So both and R are true and R is the correct explanation of A. HDI is a more comprehensive indicator. Yes, कहीं ना different indicators को ये कौन करे, बा different attributes को ये कौन करे ना consider करे. Health status देखें, okay, then education status देखें, living standard देखें. That's why it is a comprehensive indicator, correct. HDI consider education, health, not just income. Yes, that is the reason because of which we are calling that comprehensive indicator. So both and R are true and R is the correct explanation of A. Next, non-renewable resources should be used carefully. Yes, correct. They take millions of years to form and are limited in supply. Yes, that is the reason because of which non-renewable resources को हमें carefully use करवा दरकार. तैयारी होगा पाएं भी वर्ष संख्या लगे and our supply be limited. Once exhaust हेला हमें replenish ही परिपो नहीं naturally. Okay, so that is the reason. So both and R are true and R is the correct explanation of A. Sustainable development aims to meet the need of present without compromising the future. Yes, sustainable development of the two aspects था, गोटे होची present, second होची that is future. This is possible only if we overuse resources now. No, हमको carefully use करिवार अछि, overuse नुह. So A is correct but R is false. The next, environmental problems in one region can affect other parts of the world. Yes, it do not respect national boundaries. Environmental issues such as pollution, climate change are global in nature. Yes, both and are true and R is the correct explanation of A. The discussion on development is ongoing and never end. Yes, I am just पूर्व देखिथिले जे discussion of development, it is a continuous process. Okay, it is an ongoing process. It will never end. People's goal and societal needs evolve over time. What is the reason behind that? कहीं हमें डेवलपमेंट को कोच इट इज गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस, ये केबे एंड होबनी. कहीं ना विथ टाइम आम सोसाइटी भी इवॉल्व हुए, लोक मानकर गोल्स भी बेटर होबार लगे, इवॉल्व हुए. गोटे एम आम अचीव कला पर आउट किसी बेटर आम चाहिए, देन आउ किसी अधिक बेटर चाहिए. सो डेवलपमेंट इज अ ऑनगोइंग एंड नेवर एंड प्रोसेस. सो राइट आंसर बोथ स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे. सो बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. So this is all about today's session. I hope कि सेशन भल लगी. ओके, एगेन मु एंड भी सेम जिनस कहबी जे चैप्टर बुक सॉरी चैप्टर को भलसे बुझिया पाइले बुक सह मोर MCQ सेशन टी देख बहुत ही हेल्पफुल हम. ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. सो नेक्स्ट वीडियो आम हिस्ट्री कि ज्योग्राफी
बोथ आमर पेंडिंग अच्छी किसी गोटे न्यू वीडियो सहित पुणी थे आम मिसिबा ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।